Because of your biological clock, your professional life has taken a hit? ईजी नहीं था कुछ भी, बट डिस्ट्रेस ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स और तुझे अच्छी तरह से पढ़ाना लिखाना, वो एम बन गया था लाइफ में. सो And तभी के time पे very few women like you must be working, या right? How did you ever, like, how did you manage being a mother, being a woman then in a workplace? मुझे बहुत टाइम तक रियलाइज नहीं हुआ था कि मेरी मम्मी अलग है, बिकॉज तभी के टाइम पे वर्किंग वुमेन्स वर नॉट दैट मच. is that I'm no less than a man. I should be treated equally in terms of the So position. don't you think you missed out on something? Have you ever felt that? No, I don't. Looking at you today, I don't. Oh, that is the sweetest thing. Hi Smallies and welcome to the Small Girl. And today आज मेरे पास बहुत से भी ज़्यादा important guest है मेरी life की, and my biggest cheerleader, somebody who stood with me in all my mistakes when I've been doing the good and the bad stuff. My mom. Thank you so much for coming and joining me here, and it's great. Thank you, Smalley, for inviting me here, and I feel privileged. But if I had to define you for everybody that is listening to us and watching us, 5 words would we be: hardworking, confident, loving, passionate, and shopaholic. और तुम्हारी मम्मी. Yeah, definitely. And don't miss the word being so practical in life. Definitely. I think practicality goes with you because I think you're working for 25 years and so. Yes, from the age of 21, I started working, and of course, you know. Yeah, but I think तभी आपने काम इसलिए start किया था because of financial reasons. That's what I knew. क्योंकि you know you and dad decided to do the Bollywood love saga and छोड़ छाड़ के अपने माँ बाप की गली आप लोगों ने अपना संसार start किया था. But having said that, अगर वो financial distress नहीं होता, would you still be a working mother? ऑफ कोर्स वर्किंग मदर तो मैं हमेशा रहती, क्योंकि जैसे नेचर से बताया हुआ है कि कुछ अलग ही करना है और हर इंसान को ये सोचना चाहिए, और यही सोच से आई स्टार्टेड माई जर्नी. फाइनेंशियल डिस्ट्रेस तो हमेशा से रहा है, बट उस पर वर्क करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, और दैट्स व्हाट आई फोकस्ड ऑन, और उस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती गई. द लव स्टोरी वाला फिल्म, प्यार वाला जो आगे हमने बढ़ाया, शादी बना दी, फिर और हक से रहना कि अलग घर बनाएंगे, इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाएंगे, तो वैसा फितूर कुछ अलग बन के कुछ अलग करना वो तो था ही. एंड But as a mother, like if you were given a chance कि ये सब finances sort होते, सब कुछ आपके पास वो security होती, would you still be a working mother? 100%, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव, और आई थिंक हर एक लेडी को ट्रूली बिलीव करना चाहिए अपना पैशन फॉलो करने के लिए, बिकॉज अनसर्टिनिटी अबाउट लाइफ इज़ सो हाई कि अब सब ठीक है, कल क्या हो जाए, पलक झपका दो सब कुछ चेंज हो जाता है. इट्स सो 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 डिफिकल्ट टू दैन स्टार्ट दैट टाइम. So you realized that कि financial freedom, financial independence is a big thing that women should look after right now? 100%, और उसी के साथ यू नो वो करते रहेंगे तो आगे अपने फ्यूचर, लाइक अपने चिल्ड्रन के बारे में भी ये सही से प्लान कर पाएंगे, एंड उस हिसाब से आई थिंक फैमिली भी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ द मैरिज. But a 3 year, जैसे मेरे बारे में एक 3 महीने के बच्चे को आप एक बेबी सिटिंग जो क्रैशेस बोलते हैं वहाँ पे, मतलब how did you fight your heart, and like this is a message to all those women who are doing that right now. आज गिविंग अ बर्थ टू अ चाइल्ड इज एक्चुअली अ डिसीजन, एंड दैट डिसीजन कम्स विथ अ लॉट ऑफ प्लानिंग. सच बताते हैं, हर चीज़ को रीजंस दे के आगे काम करना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता. हर चीज़ को सोल्यूशन के साथ देखोगे तो लाइफ बहुत अच्छी तरह जाती है. जैसे प्रेगनेंसी लीव 3 महीने की होती है, बट आई हैड टू स्टार्ट वर्किंग इन 2 months. ऑब्वियसली आई वाज स्टिल फीडिंग यू. ईजी नहीं था कुछ भी, बट डिस्ट्रेस ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स और तुझे अच्छी तरह से पढ़ाना लिखाना, वो एम बन गया था लाइफ में. सो जब बहुत कोशिश करके कुछ करने की कोशिश करो, सब कुछ सेटल हो जाता है, और गॉड गिव्स यू दैट पावर. सो आई थिंक यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ और करते रहना चाहिए. हाँ, 2 साल की नन्ही सी बच्ची को रखना क्रश में ईजी नहीं था, बट
वो एक बिलीव था कि किसको चूज़ कर रहे हो, क्यों चूज़ कर रहे हो, वेदर द मोरल्स ऑफ दैट पर्सन इज़ राइट और नो, वो सारा चेक करने के बाद ये डिसीजन लिया गया था. So I think what you're saying is for every woman who is going through this, right? And it's like sometimes you have to take the difficult steps of, you know, keeping your child ahead. But how did you manage to choose a creche or a babysitting for your child जो आपकी कमी, you know, whatever warmth wise पूरी कर सके? तो सबसे पहले मैंने ये देखा दैट वो मेरे घर के बहुत नज़दीक हैं. यू नो, इफ़ रिक्वायर्ड, ओके, आई हैव टू, लाइक, तुम बहुत छोटी थी तभी, तो आई हैड टू गेट द मिल्क रेडी, गिव इट एट इंटरवल्स. मैं जॉब पे जाती थी, जॉब भी क्लोज बाय, इसलिए तरह से चूज़ किया. दैन इट जस्ट हैपेंड कि मैं आफ्टरनून्स में आके तुझे फीड करके जाती थी. एंड टाइम जैसे चेंज होता है उस तरह से वो लेडी भी बहुत केयरफुली तुझे ट्रीट करती थी, बिकॉज एक छोटे से 2 महीने के बच्चे को हैंडल करना इतना ईजी नहीं. आई रियली सल्यूट टू दैट ओल्ड लेडी जो बहुत एक्सपीरियंस थी. वो मैंने बहुत पहले देखा कि आई डिडंट चूज समबडी हु इज़ यंग, फैंसी, बहुत ट्रेडिशनल सा अच्छा सा घर था. वो ट्रेड्स को नहीं भूली मैं कि बच्चा उस माहौल में पड़ा होगा तो उस तरह से अच्छे से सीखेगा. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. सो दीज आर द लिटिल थिंग्स फ्रॉम माई इनिशियल from the beginning of the 2 months ka journey of my daughter, that is you. I had taken that into consideration. Yes. So one is a homely environment, etc. The other is the fact that it's going to, like, she was supposed to be like, one is the homely environment, and the second thing that you said was that distance from the house was there. What else did you look into? The other thing what I looked about it is whether it was a very special thing I could have done is that I could have actually had a full-time help also, but I chose to put her till the age of, I think she was in standard 8th, to keep her in the crashes so that she has a lot of a proper upbringing in a homely atmosphere rather than feeling very secluded, being in terms of only what the maid is training, because the way things are changing, we have to change with time also. I wanted her to actually enjoy, be outspoken person in terms of independency, not feel that she's only with a maid and with technology in terms of the current changes which we're going through in this whole way of life. You know, that's the way it is. But did you think that like आजकल के टाइम पे people feel that, you know, they should not be that strict, that discipline के नाम पे people become very strict, etc. Were you okay with the babysitter being strict with the child, or did you always be like, नहीं मैं जैसे बोलूँगी आप वैसे करो and all of that? मुझे तो ये चीज़ नहीं समझ आती कि जब बेबी सिटर आ जाता तो इतना डिफरेंस क्यों हो जाता है. एक तो तुमको माँ समान एक फैमिली चाहिए होती है, ठीक है, माँ समान फैमिली होने के बाद कुछ लिबर्टीज तो देनी चाहिए, बिकॉज if you've chosen the right person, then just give the trust to her, because without that trust it's not possible to bring up a child. So choosing the right mature person for me was very important, is because she exactly know how to keep her balance. She was So you checked कि वो भी एक फैमिली पर्सन है, she has these many children, etc. वो लोग, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं अभी, where are they, how they speak, what was language, they bringing up exactly, actually, what yeah. language do they speak, Yes, etc. yes. But I think a lot of mothers struggle with food habits आजकल के बच्चों की, right? And I wonder, I'm still thinking कि how did you manage that with me, and like कैसे करते थे आप, like so very important as you grow up. I mean, जैसे जर्नी चालू हुआ 2 महीने से तुम्हें रखना पड़ा था, but it's said from 2 months till 4 years, the right vitamins at the right time, right this, right cereals, right a complete mix, a balanced diet is what I would say. Like, believe me, getting up in the morning at 5 and making 8 meals, small meals, it wasn't an easy journey, but bringing it the right way was the right thing, you know. So- अच्छा, आयरन ज़रूरी है, अच्छा एप्पल कर दो. but ये सब बताता कौन है, आज तो टेक्नोलॉजी था. what did you do? So rightly, what is more important is शुरू हुई थी तो जर्नी जैसे ही I got to know that I'm pregnant and I had my own
ways to do the proper reading, because तब इतना अवेलेबल इन्फॉर्मेशन वॉज नॉट अवेलेबल कि ना ये अच्छा ये चैनल कर दो, अरे बच्चे को कैसे बड़ा करते हैं, नहीं नहीं ऐसा तो था ही There नहीं. was no chat GPT. There was no chat GPT, of course. And with the intercaste approach, I didn't have my In-laws or in-laws something, yeah. who were really there to help me. तो क्या करना था, तो रीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट मंथ, द वूम डेवलपमेंट, फ्रॉम दिस फ्रॉम दैट, वो सारा बहुत रीड करने के बाद I made a own plan and a sheet that how I want to bring up my daughter. Makes sense, makes sense. The other thing that I want to ask you is, यार मुझे याद नहीं है बट मुझे 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 कभी है ना, मुझे बहुत टाइम तक रियलाइज नहीं हुआ था कि मेरी मम्मी अलग है, बिकॉज तभी के टाइम पे वर्किंग वुमेन्स वर नॉट दैट मच. तुम्हें बहुत टाइम तक ये समझ नहीं आता, बिकॉज एज अ चाइल्ड ऑब्वियसली द प्रेशर, peer pressure which you've gone through all your life is, अरे सबके बच्चे टिपिकली जब शाम में सब बच्चे नीचे आ जाते तो ऑब्वियसली बेबी सिटर के बच्चों के साथ तुम भी बाहर आती थी, तब क्वेश्चन रोज रात को आता था मेरी तरफ कि सबकी मम्मियाँ बाहर है तो तू क्यों नहीं. सब मुझे ये पूछते थे कि where were you. मैंने बोला बेटा your mother has to work. नहीं, but you leave the work. So of course there came a very big question answer वाला एपिसोड हर दिन होता था. And what I felt that talking to you and making you understand in every situation why this is happening, okay, this really helped you also understand things. और जब फिर you understood it so well कि जब नेक्स्ट टाइम तुझे कोई पूछता था ये चीज़ तो तुम बोलते अरे तुम्हें क्या पता, मेरी मॉम तो वर्क करती मुझे बेटर फ्यूचर देने के लिए. That's how it was. So I think, wow, I like that. So every mother who is struggling to talk to their child, उनको समझाने के लिए, because बच्चे हैं उनको समझाना मुश्किल होता है कभी कभार. So you went with the approach of logical reasoning. Yes, logical reasoning and being there at the moment. अब ये situation है, अब इसी में ऐसे करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे या आगे जाना चाहिए और समथिंग लाइक दैट. बिलीव मी, मतलब क्रश में होके डिसिप्लिन के नाम पे at till the age of 3 years you had not even eaten one chocolate. Wow. Because that's how it is, like discipline, not zaruri I have to keep you in a fancy place to get you disciplined or something, you know. Yeah. So that's how the complete balance is. So we can't stop ignoring Hope anymore. She's Yeah, you taken should, yeah, exact exactly. all attention. That's my sister. Hope. Say hi, Hope. But you coming in the mic, so we'll have no. She'll have to go Wait. because her voice is coming in the mic, and we had to like. I don't miss a sibling. For anybody who knows, I don't have a. I used to not have a sibling until 4 years. So, but now we have Hope. Yeah, Hope is a daughter from the COVID pandemic time, and we've hoped to have lots of hopes in life. Anyways, so you chose the right creche for your daughter, and like she went there, and मतलब, she means I went there and everything. But as a mother, how did you fill that void? एक void तो हमेशा था ही ना. वो वर्ड तो कभी फिल नहीं हो सकता है. यू हैव टू बी मेंटली वेरी बी श्योर. मैं आज तक वो गिल्ट, आई वुड कॉल इट द गिल्ट ऑफ लीविंग यू नहीं, द गिल्ट ऑफ मिसिंग दोज गोल्डन मोमेंट्स जो मैं तेरे साथ बिता सकती थी. बट उसके लिए भी मैंने एक सोल्यूशन देख लिया. मतलब हर चीज़ का है ना, मतलब मैं प्रैक्टिकली एक सोल्यूशन बेस्ड वर्किंग जहाँ पॉसिबल हो सकता है सोच लेती हूँ. लाइक हाँ, डिस्ट्रेस तो मनी था, बिल्कुल से था, बट फिर भी आई चोज कि मैं जो हाउस हेल्प्स होती है, नॉट बेसिकली द फुल टाइम विच मैंने ऑलरेडी उसके बारे में बताया गया, बट एटलीस्ट खाना वाना बनाने के लिए, ताकि जितने आवर्स में घर पे रहूँ आई एम विथ. Okay. तो Even though you didn't have that much like तभी के टाइम पे पैसे जो मतलब बोलते हैं ना लग्जरी पैसे नहीं थे, but you chose to invest in this. I chose to invest in this because सब कुछ सब जगह पे नहीं मिल सकता. Because the trick here for me was that 4 hours मिल रहे मुझे दिन के, उसमें से 2 hours वो भी खाना बनाने लगूंगी, तो इस पे ध्यान कौन देगा, बिकॉज कोई नहीं था ना तुम्हें देखने के लिए. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि सुबह का जो था भाई स्कूल जाना वो नहीं किया. जहाँ मैं घर पे हूँ, पॉसिबली आई स्पेंड every minute with you from the time you got up, giving you the milk by myself,
getting you dressed up for the school, dropping you to the Bus bus, stop. I and remember. then typically, making sure that you're dressed well, the best. So Oh वो my सारी God. चीज़ें, and pack tiffin, and by the time you came from home, your food was ready. अभी तक ये बात है, जो डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, जो आज भी you are Yeah, like I know. 24-25 years, 7-7:30 you are I have to eat my Eat dinner, dinner. because it's so drained in my head कि I have to eat my dinner at 7:30. I get it. so why अब ट्रेड हुआ है, अरे प्लीज सनसेट के पहले खा लो, 7 बजे खाना खा लो, ये तो तुम बचपन से कर रही हो. Yes, I agree. But So like all I think, like if I who are supposed to be a mom, right? तो like guilty आपने, of course you will always feel that guilt, but mentally आप अपने आप को क्या बोलते थे? मेंटली ये बोलती थी कि आज मैं जो अब आज जो मैं उसे नहीं टाइम दे पा रही हूँ, ये उसके फ्यूचर के लिए अच्छा है. दैट केप्ट मी मूविंग. डिस्ट्रेस मनी को इवॉल्व करके बेटर फ्यूचर करने के लिए काम करना तो पड़ेगा. विदाउट वर्क हाउ इज इट गोइंग टू हैपन? एंड द अदर फोकस फॉर मी इज विद डिसिप्लिन वॉज एडुकेशन. मतलब तू मानेगी नहीं, बेबी सिटिंग क्लास, मतलब जो बोलते हैं, व्हाट्स द राइट वर्ड, they started getting more inquiries is because of you, क्योंकि you were the youngest girl, okay, who started doing all the ABCDs and the poetries and the English speaking so much in advance that whoever used to come, the babysitter used to feel so kicked out. I used to talk in English with people. Yeah, I was a sample. I was the beta version to show कि हमने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया है. Very good, very good. Thanks. It's not about अच्छा प्रोडक्ट. अब तुम बड़ी हो, तुम्हें ये समझता है कि मार्केटिंग है, स्ट्रैटेजी, बट वो बहुत ही छोटी सी, लाइक आई सेड, इट Very, very प्यार से she used to show. But मतलब वो इनफैक्ट अपने बच्चों को बताती थी, बिकॉज द पॉइंट हियर इज दैट अब मजाक लग रहा है, बट शुरू के दिनों में जो राइट लाइक 2 years, एंड उस टाइम पे जो एजुकेशन का जो हेड पे डाला हुआ था, वो आप तुम खुद एक्सपीरियंस कर ही रहे हो कि तुम यंगेस्ट MBA थी, यंगेस्ट टू एंटर IIM अहमदाबाद थी. इट वाज दैट जर्नी इज नॉट इजी, राइट? वो तो शुरू से ही that we will discuss later. But I mean, I want to more talk about the fact, and this is coming from my personal, like this I want to know personally, right? That didn't you ever think that I'm not giving her that warmth or something कि बड़े होने के बाद maybe she'll be intellectually good and sound, but because वो प्यार नहीं देख रही है, तो she might not know how to be good in relationships. सो प्यार की एक जो भाषा है ना बच्चे, वो अभी भी आपको पता है कि प्यार पूरा पूरा दिन रह के नहीं वो असेंबल होता है कि प्यार है. आई मीन मेकिंग श्योर, मतलब द बेस्ट थिंग आज जो सब अपने को एज फ्रेंड्स, यार व्हेन इट्स रिक्वायर्ड टू बी अ डॉटर मदर, व्हेन इट्स रिक्वायर्ड टू एक्चुअली बी द मोस्ट हिटलर वुमन इन योर लाइफ, इट्स मी. You know that. So the whole journey here is of making sure कि आपको इतना अटेंटिव कब मुझे रहना है, कौन सी चीज़ में आपको पुश करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ में आपको बैठ के समझाना है, ये बैलेंस हमेशा से रखा हुआ है. एंड दैट वाज नॉट ईजी. आज बोलना बहुत ईजी है 25 साल में, वाओ आई हैव मेड अ सच अ ब्यूटीफुल डॉटर एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर. इट्स नॉट एन ईजी जर्नी. हर चीज़ में वक्त लगता है, हर चीज़ में उतना टाइम स्पेंड करना पड़ता है. हाँ, बीइंग अ कॉर्पोरेट वुमन, frankly speaking, I have given away all the pastry parties. Why? Again, coming to the discipline part of it, that no, I have to take care of my daughter. आज शायद ये भी होता है कि अगर वो कर लिया होता तो शायद I would have been in a different position in my life, but I chose not to do that because though that's the time. So you think that choices really make the difference? Like for example, do you, because biological clock और आपका professional जो clock होता है वो साथ में चलता है, right? So you feel that because of your biological clock, your professional life has taken a hit? It's not taken a hit. It's actually also for the each woman to decide कि उसको कहाँ तक अपने career goal में पहुँचना है.
आज थोड़ा सा मेरा ट्रिजेक्टरी बहुत आगे चला गया था कि मुझे बहुत कुछ आगे करना और अभी भी अनस्टॉपेबल है. हाँ. सो इट्स ऑल अबाउट यू नो कि हर लेडी को कहाँ तक जाना है. I wanted to talk about the fact that you're an ambitious woman. And तभी के time पे very few women like you must be working, Yeah. right? How did you ever, like, how did you manage being a mother, being a woman then in a workplace? What were the things that you always made sure that you kept in mind? What I kept in mind is that I'm no less than a man. I should be treated equally in terms of the position. And at the same time, making sure that for whatever reasons the family is first and time if required to be given, it has to be given. But kabhi kabhar, didn't you miss out on these moments because of work? Maybe any match, any parent-teacher meeting, or anything. So firstly, again, never missed on any parent-teacher meeting unless was traveling, which just happened once. That way, disciplinary calendars, mental health levels, medical tests, doctor visits were my key parameters to keep everything in alignment. So obviously, every working woman also has their holiday list in place. So my holidays were for these things, and they were not for any other social gatherings. That's how I kind of balance the whole thing, bringing up. So, don't you think you missed out on something? Have you ever felt that? No, I don't. Looking at you today, I don't. Oh, that is the sweetest thing. Looking at you today, no. Because nothing comes without any sacrifices. That big, small, whoever has to go through that each level. I wanted to ask ki, we have been friends, right, before anything. And like that's the bond that we still share, where I can come and tell you about where I was, what I was doing, which date I went for, everything. And there is no judgment. When I was growing up, didn't you ever fear कि ये bond नहीं रहेगा? Maybe मैंने इसको बहुत छूट दे दी है, she'll just leave me. Yeah. So, making you a friend was my decision. Okay. So, rightly, agar I have heard of stories where the parents are very strict, फिर भी बच्चे को जो करना हो तो वो करता ही है. That's true. को तो मतलब हाँ, nothing can stop when might as well अगर चीज़ें बाहर से पता चले उससे अच्छा being friend and giving her or giving you rather the whole the rights and wrongs about how to take and lead life, isn't that a beautiful experience rather than just dealing with a fright that अब ये कर दूंगी तो मम्मी को पता चल जाएगा, ये कर दूंगी तो ये हो जाएगा. No, why? So whenever you, for all the mothers there, if they catch their child doing something which is not right, how should they tackle? Obviously, I think a lot of parents these days do a lot of coaching before actually giving a birth to a child. But the practical lookout here is कि उस समय please उसको कुछ मत बोलना. Please take the person, the child, in safe, softer zone of custody, and understand both ways कि क्या हुआ था. But what we do is, in terms of anger or something like that, we try to treat the child in a very bad way, and that makes him very fearful, is what I've seen and observed. Yeah. How can you become the friend of your child? So, being a friend of the child it's not a very easy thing that happens. Is like you need to actually get into her shoes of her age and then try and start communication in that way. Otherwise, it's not going to be possible, and that's really helping me now. Look at you, man. At times when I But tend don't you feel that she will take you for granted if you're a friend? no, Why? because that's about the I would say the respect that has been inherent into you. You know that respect, the teachings that have been given to you.
You had actually told me once that तुझे live in रहना है तो तू रह लेना. आज से नहीं, when लिव इन चालू भी नहीं हुआ था इंडिया में. क्यों? मतलब आई मीन तुझे नहीं लगता लोग पॉडकास्ट क्या सोचेंगे, बच्ची को क्यों? छोड़ दिया क्यों? इतनी. मुझे एक चीज बताओ, आज कौन सा मैरिड इंसान ओवर द इयर्स खुश है भाई? मतलब इफ यू सी, अगेन टू स्टार्ट विद कमिंग फ्रॉम अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, आई मीन ट्राई कर लो यार 2-3 साल सब कुछ. The chase is nice always, is lovey dovey, is beautiful, everything is fine. When you actually start living, you understand each other's natures. Understand, and you think you can live the rest of the life with the same person. Why not think of getting married? So I think we're at the end of the place, and I want to do this what ifs, where I'm going to say statements, and you have to just say your reactions on it. Okay? Cool? Alright, we'll try this. Alright. What if I was a lesbian? So what? What if I wanted to have a live-in You relationship? should go for it. What if I want a career break? You should take. What if I didn't want to do an MBA? I would have pushed you for this. Why? Education. Okay. What if you were asked to reverse the role with a housemaker? A plain no. A strict no, rather. Lastly, just understanding one part of it, right? Now you're entering your early 50s. Been a working woman, been a independent kind of a woman. Is there anything you're fearing, or are you ready for the next set of chapter? Again, welcoming everything. As I said previously, if I don't change and welcome with the change of time that's going to be ahead, would that be lovable, enjoyable? No. So my whole idea is let each day be the way it is, live it up to the most, and the rest will follow. Thank you so much, Smallies, for being with us. And this is a small way that we wanted to show you all that if you're a working woman and have a child back home, or you are a child who has a working mother, it's all going to be fine. Look at us. We did fairly well, and so would you. Take See care. you soon, and see Love you you next guys. week. Bye. Take care. Bye.